Hi everyone. So in this session we are going to cover September monthly current affairs. हम लोग स्टार्ट करेंगे वीक 1 से एंड वी विल कवर ऑल द वीक्स इन दिस सेशन इटसेल्फ. ठीक है ना. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 पूरा सितंबर हम लोग वन फ्लो में कवर कर पाएंगे इस तरह से. All the weeks have been divided into three parts. We have RBI first, then SEBI, then others. SEBI आपको लग सकता है ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट सेबी की न्यूज़ कम भी होती हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप देख लीजिए एक बार, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद आरबीआई करंट अफेयर्स सितंबर के लिए. द फर्स्ट वन इज अबाउट एनबीएफसी ज्वाइनिंग यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. नाउ देर इज अनदर इंटरफेस विच वॉज क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब. उसका नाम है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट. Let's try and know about that and then we'll come back to this news item. इसके बारे में आई थिंक जानना ज़रूरी है. दे कैन बी अ क्वेश्चन मेनली ऑब्जेक्टिव फ्रॉम पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट. और उसके बाद दे कैन बी अ क्वेश्चन आई थिंक रिलेटेड विद ULI, which I believe is much more important than this public tech platform, but we should have an idea about this as well. So PTPFC, this was launched in 2023 and created by Reserve Bank Innovation Hub. It is very similar to ULI. It's a digital infrastructure. The objective is to enable credit products and services. तो credit provide करने के लिए जैसे हमारा UPI है, it did not provide credit till now. तो हम लोग पे कर सकते थे अपने डेबिट कार्ड को अटैच करके या फिर अपने अकाउंट को अटैच करके. Similarly, what if you want a loan and you want an immediate loan? For that, PTPFC was created and it was being used for certain kind of credit transactions as well. अब ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया था. इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय आरबीआई और बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो अब नाउ दैट चेंज इज बीइंग मेड सो दैट इट कैन बी used to expand ULI, Unified Lending Interface. Okay. Now, this is an end-to-end digital platform that has an open architecture, which means open APIs होते हैं, मतलब किसी भी ऐप के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो. That is why it is called as plug and play model. Okay. The ambition or the aim or the objective, I've already explained to you that it is to offer credit to various sectors of the economy, especially small businesses, farmers, and unserved regions. That is the main objective with which PTPFC was created. अब exactly use किस तरह से हो रहा है या हो सकता है. PTPFC is designed to knit data from various sources. How does it become innovative? Is not just because it can provide you credit instantly. It is because, in fact, that it can verify the data that can enable you to get credit immediately. Let's say I want a loan from by using PTPFC platform, and I just have one car, let's say, or I have one motorbike, and I want to use that as collateral. But वो motorbike मेरी है, वो motorbike के papers का verification, all of that often takes days or even weeks. This is where the platform becomes revolutionary because it has that ability to link various other companies जिससे कि वो verify data जो data है about the ownership of that vehicle वो immediately verify हो सके. अब ये लैंड में और कॉम्प्लिकेट हो जाता है बिकॉज लैंड रिकॉर्ड्स आर कंप्लीटली ऑफलाइन राइट नाउ, नंबर वन, एंड लैंड रिकॉर्ड्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड और उसमें नकली भी बहुत आते हैं. So this is where PTPFC has to innovate. So it is trying to knit or combine together data of land records, account aggregators जो भी डेटा देते हैं कि इस इंडिविजुअल का फाइनेंशियल डेटा क्या है, फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, डेटा फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, आधार KYC करना जिससे कि इमीडिएटली आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैन बी वेरीफाइड. ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक इनोवेशन एट द बैक एंड एट द सेम टाइम आपको जहाँ से भी डेटा चाहिए उसको वो भी डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए. इट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल. ऑल ऑफ दैट इज बीइंग डन राइट नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट ULI a reality, in order to create ULI more effective and useful. ठीक है ना. In April, NABARD integrated its e-KCC loan origination system portal with PTPFC. So April में recently only NABARD integrated or started using PTPFC
फॉर EKCC लोन, बेसिकली ट्राइंग टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड लोन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ऑनलाइन ही देना शुरू कर सके. So this is the entire idea about PTPFC number one. Now what is happening is RBI is trying to rebrand PTPFC as ULI. Basically ULI जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है UPI का, उसका हमने लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया ULI, बट उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वाई टू क्रिएट completely new technology if you already have that technology being created by a subsidiary of RBI. तो RBI बोल रहा है कि इसको rebrand कर देते हैं so that it can have more reach and then we can try and work on this innovation as well. This way NBFCs can join ULI. ULI is like credit side of UPI, ये आपको पता है. PTPFC has reduced turnaround time for KCC loans, और रीब्रांडिंग ऑफ PTPFC विल गिव अ बूस्ट टू इंडियाज क्रेडिट सेक्टर. तो इसमें एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि इट राइट नाउ एग्जिस्ट अंडर RBIH, बट इफ वी वांट बैंक्स, NBFCs, everybody to be able to use PTPFC, then we have to move it from RBIH, Reserve Bank Innovation Hub, because it's a non-commercial entity, it's for innovation, towards NPCI, National Payment Corporation of India. वहाँ पे मूव करके then they can legally carry out or complete this entire process. I hope it is clear. So first one is clear. Next पे आते हैं. Yes. RBI on household set to rebuild financial assets. Now this is specifically about household savings. I've already taught various numbers related to household savings to you guys. मैंने आपको RBI की एनुअल रिपोर्ट में ये पढ़ाया था. इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स फाइन, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट द एनुअल रिपोर्ट येट अगेन. नाउ द एनुअल रिपोर्ट गेव स्पेसिफिक नंबर्स अबाउट हाउ द सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स आर मूविंग, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हाउस होल्ड सेविंग कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू मेजर पार्ट्स. वी हैव फाइनेंशियल सेविंग्स एंड वी हैव फिजिकल सेविंग्स. फाइनेंशियल सेविंग्स जैसे कि डिपॉजिट्स, करेंसी, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी फाइनेंशियल सेविंग्स हो गई. फिजिकल सेविंग्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, ऑल दीज आर फिजिकल सेविंग्स. हाउस होल्ड सेविंग्स जो है दे आर चेंजिंग. व्हाट इज द चेंज? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर. 1 सेकेंड. यस, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स विच मीन्स फाइनेंशियल सेविंग्स माइनस फाइनेंशियल बोरोविंग्स. अब फाइनेंशियल सेविंग्स के भी दो पार्ट हो जाएंगे, इधर आप सेव कर रहे हो या फिर आप बोरो कर रहे हो. इन दोनों में से एक दूसरे को माइनस करोगे, यू विल कम एट नेट फाइनेंशियल सेविंग्स. Net financial savings are dropping. Why? Because borrowings are increasing. Why are borrowings increasing? Financial borrowings specifically, because people are using, number one, more financial borrowings in order to invest in physical assets, जैसे कि housing. And number two, people are also using financial borrowings to spend on consumption, because after COVID, people's consumption has increased and also inflation has gone up. There are multiple reasons, but yes, using financial borrowings to invest, number one. Using financial borrowings to consume, number two. These are happening. Okay. अब इनको ध्यान में रखिए. तो numbers क्या है? Net household financial savings dropped to 5.2% as households have increased financial liabilities, which have reached to 5.7% of gross national disposable income. तो financial liabilities या financial borrowings जो हैं वो हमारी बढ़ गई हैं. दे आर इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई नेट फाइनेंशियल हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स हैव गॉन डाउन. ओके, इनके ग्रॉस नंबर्स मैंने एनुअल रिपोर्ट में भी दिए हैं. यू कैन हैव अ लुक एट इट देयर एज वेल. ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये आपको पता है. आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस दैट. डेटा ऑन फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग्स में टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स 18.1% 22-23. इसमें से फाइनेंशियल, दीज आर अगेन ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स अप्रॉक्सीमेटली 11%, फिजिकल सेविंग्स अप्रॉक्सीमेटली 12%, और नेट इनके ऊपर नंबर्स दिए हैं. नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग इज 5.2%. ओके, कॉर्पोरेट सेविंग्स में नॉन फाइनेंशियल सेविंग्स 11% एंड फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स 2.8%. ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनुअल रिपोर्ट से उठाए मैंने. ये इस न्यूज़ में या फिर in this speech they were not there. I have included these numbers to make it more relevant for you guys. The investments by government has also increased. Increase rate क्या है? Growth rate in investments by the government 10.2%. It used to be lower, the growth rate in investments.
Gross capital formation 32.2% है as a percentage of GDP. Gross capital formation is the amount of new capital that you are creating in the economy, new assets that you're creating in the economy. Okay, so these are all the numbers. Now, all of these, basically, the news item was focused upon household savings, that these household savings, net household savings are going down because we are borrowing more, which is not a very good trend because people are using their borrowings to invest, which might backfire. Therefore, RBI recently did what? They increased the rate on unsecured borrowings, जो भी unsecured borrowings होती हैं, unsecured lending सॉरी, बाय द बैंक्स, जहाँ पे कोलेटरल नहीं होता है, उसका जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में रिस्क वेटेड एसेट होता है, दैट रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, जिससे कि सो दैट द बैंक्स एंड एनबीएफसीज कैन बी डिस्करेज्ड फ्रॉम लेंडिंग in an unsecured format to all these people or institutions because they're using these borrowings in order to invest somewhere or the other. Okay. Households in India generally save more than they invest. These savings don't just sit idle. Banks and financial institutions are able to use these savings in order to lend further. But now it is going in reverse direction. Banks and financial institutions, NBFCs, are not able to find enough savings, and therefore they have to pick up money from somewhere else in order to lend. And number two, पहला जो cause है, which is that people are not saving. It doesn't mean that people do not have enough money. It means that they're investing elsewhere this money, or they're just consuming all this money. That is where RBI is trying to change. Financial assets of households have begun to rebuild. अभी ये 2017 to 23 में 11.5% हो गया है, which means people are investing in markets more rather than just saving directly in banks and NBFCs. That is also happening. We are either borrowing in order to borrow कर रहे हैं invest करने के लिए, या फिर whatever savings we have, we are, instead of giving it to the bank, we are putting it in the financial market even though the risk is higher. Okay, so that is what this news is about. I think it is clear. इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ numbers हैं. आगे चलते हैं. Now this one, credit to deposit ratio, is connected with the above one because when people are saving less or transferring these savings to banks lesser, ये savings जो है banks को उतना transfer नहीं कर रहे हैं अगर लोग, this money is going to the financial market. As a result, the banks do not have a lot of these savings, therefore their deposit is going down, but their credit is going up because people are still borrowing a lot, and banks are always want to lend more so that they can make more money. So banks are lending heavily, but they are not able to find enough deposits in order to make these lending. So banks are finding other kinds of deposits from elsewhere in order to be able to lend. तो क्या हो रहा है? As a result, the credit to deposit ratio is going up. Credit is going up, deposits are going down. So automatically credit to deposit ratio has started going up. पहले क्या होता था? Let's say deposit 100 रुपया है तो credit 50 रुपया है. तो ratio कितना हो गया? 50/100. Now deposit is 100, credit is let's say 70. So 70/100. So credit to deposit ratio is increasing. This is a problem because after a certain point, it means that the banks are not able to find enough deposits. That is why RBI is talking about it. Okay, that is all there is. There can be a question on what is CD ratio. They can ask you the definition, the formula. They can give you a basic question numerical also and ask you to solve it. बहुत basic सा वो निकाल सकते हैं. मैंने आपको concept बता दिया है. Okay, let's move down and see if we have something here. तो जो भी डिपॉजिट बैंक्स के बाद आते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी टू द बैंक्स बिकॉज दे आर अवेलेबल एट अ वेरी चीप रेट. द सेविंग्स दैट बैंक्स गेट फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. But when they are not available to these banks through in the form of savings from people, automatically their structural liquidity is going down and they have to borrow from elsewhere in order to be able to lend. Okay. The numbers are important. Please remember, try and remember these numbers. CD ratio for scheduled commercial banks, 79.6%. Private sector banks, it's very high, 94.1%. Current account, saving account, जो deposits थे, it made 40.5% of total deposits.
and 40.7% in private sector banks. Okay. Current account, saving account आपको पता है, I believe. I don't need to remind you again or teach you again this. जो भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स आते हैं बैंक्स के बाद, दे आर कॉल्ड एज कासा डिपॉजिट्स, एंड दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे चीप डिपॉजिट्स द बैंक गेट्स. ओके ओके. हायर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अमंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अब आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत नंबर्स दिए हैं दैट क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हैज़ बीन इंक्रीजिंग. नेट हाउस होल्ड सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये हमने ऊपर पढ़ा था, एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ it has an impact on credit deposit ratio because the savings of households in banks are going down, and instead either they're consuming that money or they're saving it in any other format, either physical assets or financial assets other than banks. Okay. What banks are doing to attract more funds? They are increasing their deposit rates. आपने आजकल देखा होगा deposit rates have started going up. They're also using certificate of deposits. Now this is a very good question that can be asked from you, both objective as well as answer writing. So banks are facing this problem, but what are they doing about it? How are they resolving this issue? Because it's not going to change overnight, even if RBI tries to do anything about it. तो अब क्या करेगा बैंक? रिएक्ट करेगा, या तो either they will increase the deposit rate so that people would want to save with banks, or they can start borrowing using other methods. So what they're doing, they're also using certificate of deposit. They issue certificate of deposit and borrow using certificate of deposit from the market. Okay, that is also something that they can do. Okay, credit CDs, certificate of deposit के बारे में यहाँ mentioned है. Minimum amount that you can borrow is 5 lakh, and after that in multiples of 5 lakh only. आगे चलते हैं. 610th meeting of Central Board of Directors of RBI. ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. It just says that 610th meeting हुआ था. What can be asked? Phase 1 टाइप क्वेश्चन है, बट इवन देन मैंने मेंशन किया है. द बोर्ड रिव्यूड द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो एंड आउटलुक. तो थीम क्या था, वो ये था. एंड नॉर्मली इट इज दिस सेंट्रल बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड एटलीस्ट 6 times in each year and at least once in each quarter. This is something that can be asked in the examination as well, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे. Okay, let's move forward. RBI Governor Shaktikant Das on economic growth. What he has to say on economic growth. According to him, of course, they are very bullish about economic growth in India. India's growth story remains strong with GDP projection of 7.2% in financial year 25. This number is important, number 1. Key points क्या हैं speech के? तो how are they justifying that the economic growth is bullish in India? Number 1, government spending, which gives us, जो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारा इंक्रीज करके रखता है. इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग heavily and there is good growth in the amount of money government is investing, especially in infrastructure projects. So this is number 1, which shows that because the government is bullish and it is already investing a lot of money, the market is going to keep growing, the economy is going to keep growing, we will have enough employment opportunities, we have enough growth opportunities as well. Second is private sector का role जो है, it plays a big role in the entire growth of the economy, and according to this speech he said the private corporate sector is driving investments because it is becoming an important integrated part of global supply chains. Third is inflation and food prices are in control according to RBI. He reaffirmed the importance of RBI's flexible inflation targeting framework to ensure price stability. ये हमें पता है flexible inflation targeting framework क्या होता है. I don't think we need to discuss about it again. Because they say according to them inflation is in control, therefore they want to say that yes, inflation is in control, the economy is going to grow well. Reforms, the RBI said we are, and the government is focused on reforms on GST, reforms on IBC. They've already done these reforms and a lot of new reforms are also happening, like labor reforms. Okay, market determined exchange rate for the rupee. So all these reforms have already happened, or their phase 1 has already happened and the phase 2 or multiple phases are also starting. Land, labor, agriculture, in सब में reforms pending हैं and the government is working on them. So because these reforms are happening and have already happened in the past, therefore RBI is bullish. Okay. Das called on banks and financial institutions to create
tailored financial products for MSMEs. This is something that the RBI said, that we need to have specific customized products for MSMEs because MSMEs drive growth, unemployment in the country. So this gives you a very good answer that can be written if there is a question on economic growth of India. Where is it right now? What is happening? How is it good? And what are the future expectations? तो यहाँ पे आप RBI के गवर्नर की जो रिकमेंडेशंस हैं या RBI गवर्नर ने जो बोला है वो सब आप डिस्कस कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेम डे रेमिटेंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. सेबी इज जस्ट सेड दैट वी आर ट्राइंग टू चेंज remittances for foreign portfolio investors from T+2 to T+1, which means that if an FPI invests and then takes out money, they can receive that money with within T+1. उससे क्या होगा? You receive your money as a foreign investor faster. You can use that money for other things faster. Automatically turnaround time कम होता है तो your investment in the economy and out of the economy, overall trade of money increases. And it increases the trust of people and institutions in the system, and it increases the flow of money also in the system. Okay. इससे speculation भी control में रहती है because when you have very high time turnaround time, तो उसमें क्या होता है? Lot of institutions, what they will do is, आपने, let's say I am a foreign portfolio investor, I have sold something and I am supposed to receive money, but मुझे पैसा मिलेगा 5 दिन बाद. In these 5 days, that company that holds my money, that broker, will invest that money somewhere and earn interest for these 5 days. और फिर वो मेरे को पैसा देगा. And because it's not his money, वो speculation बहुत ज़्यादा करेगा उस पैसे. So that is how speculation in the economy turns into gambling if such things are happening. But if the money is able to go back to a foreign portfolio investor immediately within a day, automatically speculation stays in control. Next, RBI revised the entry and exit criteria for फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट. ना ये बड़ा टेक्निकल है. मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ. 3 बेसिक चीज़ें हैं जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा. यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहली है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट. पहले तीनों के नाम देख लेते हैं. सेकंड इज मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, एंड थर्ड इज एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू. 3 चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस किए हैं. अब ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या है? How many contracts can be created on a single stock of a company? एक कंपनी का एक स्टॉक है, उस स्टॉक के बेसिस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं? What are futures and options? These are agreements or contracts which are created, and these are derivatives जिनकी वैल्यू कोई ना कोई नीचे एसेट है उसके बेसिस पे डिटरमाइन हो रही है. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग क्रिएटेड. तो एक कंपनी के एक शेयर का के बेसिस पे कितने, हाउ मेनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, उसकी लिमिट चेंज करी है. तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इज अ लिमिट ऑन टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन बी क्रिएटेड एट एनी पॉइंट इन टाइम फॉर वन पर्टिकुलर स्टॉक. ये पहली चीज है जिसमें चेंज की है. सेकेंड, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, द टिपिकल ऑर्डर साइज फॉर 3 to 6 month पीरियड. मतलब जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, उसका एवरेज मीडियन ऑर्डर साइज कितना होगा, उसमें चेंजेस किए हैं. एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक्स डिलीवर्ड और सेटल्ड डेली, द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. अब पहले वाले में तो जो कॉन्ट्रैक्ट कितने बन रहे हैं, थर्ड में है ट्रेडिंग कितनी हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग कितनी हो रही है. पहले वाले में तो होल्ड कर रहे हो, थर्ड वाले में यू आर बाइंग एंड सेलिंग. सो एवरेज बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग ऑन एवरी स्टॉक एवरी डे इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, उसमें भी चेंजेस किए. अब चेंजेस क्या किए देख लेते हैं. तब सेकंड वाला जो था मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, उसमें 75 लाख कर दिया है, पहले 25 लाख था. सो द एवरेज ऑर्डर साइज फॉर वन स्टॉक वो 75 लाख कर दिया है. ठीक है. मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, SEBI has increased market-wide position limits of stocks over the previous 6 months from 500 crore to 1,500 crore. 6 महीने में मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं एक स्टॉक के, वो 1500 करोड़ कर दिया है. एंड एवरेज डेली डिलीवरेबल वैल्यू, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, 35 करोड़ 10 करोड़ से बढ़ा के 35 करोड़ कर दिया है. So these are the changes that have happened. Now these numbers can be asked, less chances of them being asked in RBI, but futures and options बहुत न्यूज़ में है.
तो दे माइट आस्क यू एज वेल. तो प्लीज़ थोड़े से नंबर्स ध्यान में रखिएगा. आई होप समझ में आपको आ गया है. ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं. आगे चलते हैं. विंडफॉल टैक्स. ये विंडफॉल टैक्स क्या है? When there is a substantial movement in the market, especially it happens in यहाँ पे mentioned है एनर्जी कंपनीज, स्पेशली एनर्जी कंपनीज में होता है, ऑयल कंपनीज में. लेट्स से सडनली देर इज अ वॉर सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, जैसे गल्फ वॉर हुआ था 1973 में, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज लेस प्रोडक्शन एंड लेस एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल. So because of fall in supply of oil, the prices of oil skyrocket. पहले प्राइस था 50 रुपये का, लेट्स से 1 लीटर, अभी वो हो गया 200 रुपये का 1 लीटर. तो when there is this sudden shooting up of price of oil, what will happen? These energy companies who have already purchased a lot of this oil, they will start making more money. Because ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंपनीज इन्वेंट्री नहीं रखती. ये लोग बहुत बड़ी कंपनीज हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है. तो this extra income that they've earned, not because of any innovation or anything else, no level of their contribution, but just because the market has reacted in a certain way. तो वो जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा कंपनी को, उस पर एक नया टैक्स, a new tax can be affected, can be implied, can be levied by the government, which will be called as a windfall tax. That is all there is to it. Okay, so it's basically a tax that can be levied by the government on any windfall profits or revenues that any company receives because of any external or internal change in the economic scenario. Okay, तो खाली मीनिंग पूछा जा सकता है, there's nothing else to it. India Post Payment Bank marked its 7th foundation day. तो let's try and know more about India Post Payment Bank, because वहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है. अब इंडिया पोस्ट आपको पता है क्या है? इंडिया पोस्ट ने अपना पेमेंट बैंक बनाया, विच मीन्स देव क्रिएटेड अ पेमेंट बैंक थ्रू विच दे कैन रिसीव डिपॉजिट. दे कैन नॉट लेंड मनी बिकॉज पेमेंट बैंक, बट दे कैन रिसीव अ लॉट ऑफ डिपॉजिट्स. तो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? Although post deposits, India Post was already providing a lot of deposit services, especially टाइम डिपॉजिट्स. वो लोग पहले ही सर्विसेज देते थे, अब पेमेंट बैंक बन गया है तो और ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं. जैसे कि सेविंग और करेंट अकाउंट कैन बी ओपन्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैन बी डन थ्रू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, bill payment, utility payments, access to third party products such as loans and insurance can also be offered. They can also not merge but collaborate with various third party providers, and they can provide those services to people in villages as well. Okay, इंडिया पोस्ट का नेटवर्क कितना था? 1,61,000 पोस्ट ऑफिसेज एंड 1,90,000 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द लास्ट 7 years. 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज established under the Department of Post, Ministry of Communication, with 100% equity owned by the Government of India. बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है. आगे चलते हैं. न्यू MSME क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, इसको देख लेते हैं क्या है ये. यहाँ पे देखते हैं. हाँ, तो MSMEs want loans from you or wants loans from banks, but how do banks figure out whether this particular MSME should be given a loan or not? Which MSME should be given a loan, which MSME should not be given a loan, how they should be given a loan, वो सब figure out करने के पुराने methods चलते आ रहे हैं. So now a new loan assessment or credit assessment model is being created, which is based on digital footprint for public sector banks. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए मॉडल बनाया है विच इज़ नॉट बेस्ड प्योरली अपॉन द हिस्टोरिकल मेथड्स विच वर बीइंग यूज्ड टिल नाउ, जैसे कि उसने कितना रेवेन्यू कमाया है, पहले लोन कितना लिया है, कि क्रेडिट स्कोर कितना है. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो डिजिटल फुटप्रिंट्स विच आर कैलकुलेटेड थ्रू वेरियस अदर मेथड्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल GST सबमिशन कितना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, ऑफलाइन कितनी है, कैश में कितनी है ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितनी. दोज काइंड ऑफ एरियाज वेयर डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड. ओके, so in order to assess the credit worthiness of an MSME, the digital footprint is going to be relied or used, and not only traditional methods जहाँ पे खाली टर्नओवर के बेसिस पे हम असेस करते थे whether this company is going to survive in the future or not. So it's a more holistic method of figuring out the credit
ability of an MSME. Okay. According to government data, total outstanding credit to MSMEs stood at 27 trillion, increasing from 22 trillion. 27 lakh crore होता है, trillion is lakh crore. Okay. So total outstanding credit by scheduled commercial banks to MSMEs is 27 lakh crore. आगे चलते हैं. Currently, banks require MSME seeking loans above a certain threshold, usually between and 30. Not very important. अभी देख लेते हैं some key points of the model. This model can very well be asked in either objective as well as descriptive part in the examination. क्या क्या फैक्टर्स होंगे? सप्लाई चेन डायनामिक्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंडीशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब मेथड्स यूज कर सकते हैं. जीएसटी फाइलिंग, यूटिलिटी पेमेंट्स कितनी है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, ऑल दीज कैन बी ऑटोमेटिकली वेरीफाइड बाय पिकिंग अप द एंटायर डेटा, एक्सट्रैक्टिंग द एंटायर डेटा ऑफ वन एमएसएमई फ्रॉम वेरियस डिजिटल एंटिटीज. आपको मैनुअली करने की भी जरूरत नहीं है, एक साथ आपको सारा डेटा मिल जाएगा एंड वन AI मॉडल कैन फिगर आउट एंड क्रिएट अ रिपोर्ट एंड गिव इट टू यू. यार ये इसके खर्चे हैं, ये सारे अलग टाइप के खर्चे हैं. बेस्ड अपॉन दिस इज द क्रेडिट असेसमेंट ऑफ दिस MSME. DEA, Department of Economic Affairs, has issued 6 new rules for 3 schemes. कौन कौन सी स्कीम्स हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना एंड सम अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स. एक बार देख लेते हैं क्या है ये. तो ये जो इन्होंने रूल्स निकाले हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो मैंने वो रिमूव करवा दिए हैं. बट बिकॉज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन चेंज्ड फॉर दीज 3 स्कीम्स, आई थिंक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 3 स्कीम्स स्पेशली. तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, इनके बारे में पढ़ लीजिए. यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंशनड है, जैसे कि मिनिमम डिपॉजिट डेटा, मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में. गर्ल चाइल्ड के नाम पे खोल सकते हैं टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स. ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं या बैंक में खोल सकते हैं. विथड्रॉल कब अलाउड होगा? फॉर हायर एजुकेशन और टू मीट एजुकेशनल एक्सपेंसेस. प्रीमेच्योरली क्लोज हो सकता है इन केस ऑफ मैरिज आफ्टर शी अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज. 18 साल के बाद आप निकाल भी सकते हो पैसा. द अकाउंट शेल ऑटोमेटिकली मेच्योर एट द एज ऑफ 21 ईयर्स. उसके बाद पैसा निकालो नहीं निकालो कुछ नहीं होगा, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलना ही बंद हो जाएगा, मेच्योर हो गया वो. डिपॉजिट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो एज अ डिपॉजिटर, लेट्स से अ पेरेंट वांट्स टू प्रोवाइड 1.5 लाख टू हिज और हर गर्ल चाइल्ड, तो वो डालेगा तो उसको 80C में डिडक्शन भी मिलेगा. इंटरेस्ट अर्नड इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. ऐसे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, इंटरेस्ट 4% पर एनम, मिनिमम 500 रुपीज़, मैक्सिमम डिपॉजिट कुछ नहीं है. इंटरेस्ट अप टू 10,000 अर्न इन फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम 80TTA में. पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे पहले 1968 में आया था बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट. इसमें भी 80C में आपको 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है. लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है. इंटरेस्ट रेट 7.1% अभी चल रहा है. इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम. उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो पर डिडक्शन नहीं मिलेगा. हु इज़ एलिजिबल फॉर PPF? एनी इंडियन सिटीजन. कैन नॉट बी हेल्ड जॉइंटली दो यू कैन मेक अ नॉमिनेशन. मल्टीपल लोग जॉइंटली अकाउंट नहीं खोल सकते, नॉमिनेशन बना सकते हो. मतलब वन पर्सन कैन से दैट इफ आई पास अवे टुमारो then this person is my nominee, all the money will automatically go to this person. As I said, exempt under section 80C of income tax act up to 5 lakh per annum. Okay. नीचे चलते हैं. CEA on financialization. So chief economic advisor talk about a new concept or a new trend being created in India, which is financialization, which means dominance of financial markets in the economy. ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर मूविंग देयर सेविंग्स फ्रॉम बैंक्स टू ईदर फिजिकल सेविंग्स और फिजिकल परचेजिंग फिजिकल एसेट्स और मूविंग दैट मनी टू फाइनेंशियल मार्केट्स. मैंने बोला था ना कि ये हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है. नाउ दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनेंशियलाइजेशन. व्हेन पीपल स्टार्ट मूविंग देयर सेविंग्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियलाइजेशन. तो बस ये टर्म था जिसको मुझे लगा डिस्कस कर लेना चाहिए बिकॉज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन.
इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ रीजंस दिए हैं व्हाई इज फाइनेंशियलाइजेशन इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी. सर्टनली मैनी बेसिक रीजंस, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट में ऑफकोर्स रिटर्न ज़्यादा है, ऑल्दो द रिस्क इज ऑल्सो है बट रिटर्न इज ऑल्सो है. इंडिया की जो डेमोग्राफी है विच इज़ यंग, they have more capacity to take risks, they're willing to take risks in order to have more returns. Middle class is expanding, which has more higher capacity to higher capacity or ability to consume or to invest also. तो उनके पास उतना फंड आता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दे यूजिंग दैट मनी टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आपको मिलेंगे. स्टॉक मार्केट्स हैव बिकम मोर एक्सेसिबल टू द पीपल because of various brokers which have become online and come to your mobile applications. That is another reason. SEBI's conditions or regulations have become simpler. So markets are able to reach to the people and people are able to reach to these markets. So there are certain of these reasons that can be explained if there is a question on financialization. आगे चलते हैं. UPS and NPS. UPS is Unified Pension Scheme that has now been implemented. NPS is National Pension System which was launched in 2004. Now, अभी तक NPS चलता आया था. There was some kind of debate going on for the past 2-3 years कि भाई we should go back to the old pension scheme, old pension system. The difference between NPS and old pension scheme is that NPS में it is a defined contribution scheme, which means you contribute, that money goes to the financial market, or at least a part of that money goes to the markets, and your return will depend upon how your scheme performs in those 20-30 years. और आप जब रिटायर करोगे तो आपको कुछ पैसा वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा in the form of annuity, and some money you will receive in lump sum. The problem with this was that it is a defined contribution scheme, which means that you don't know how much money is going to be there with you when you retire. People started saying, let's go back to old pension scheme. Old pension scheme was a defined benefit scheme. It was more heavy on the government financially because the benefit here is clearly defined in advance only. अब उनको combine करके एक नई scheme बना दी which is unified pension scheme which merges the elements of defined contribution and defined benefit. इसमें क्या होता है, employees contribute 10% of their basic salary plus DA while the government contributes 18.5% of their basic and DA. तो इसमें कंट्रीब्यूशन सरकार का काफ़ी बढ़ गया है. हर कोई नहीं है अभी, नॉट एवरीबडी इज देयर अंडर यूपीएफ. सम कंपनीज एंड सम पीपल आर स्टिल नॉट अलाउड. धीरे धीरे दे विल मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन. पेंशन कितनी गारंटीड है? 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 12 months. दिस डिड नॉट हैपन इन द केस ऑफ एनपीएस. पेंशन अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल और मार्केट फ्लक्चुएशंस. To qualify for UPS, Unified Pension Scheme, government employees must have completed at least 10 years of service. तो इससे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को अभी एलिमिनेट कर दिया गया है. नुकसान क्या है इसके? In NPS, employees can have a higher equity exposure, creating potential for higher returns. यहाँ पर वो UPS में वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. 10 years of service criteria means that those who retire earlier will not be able to qualify. Only a limited number of employees qualify currently for UPS. Only central government employees are eligible for UPS. Only Maharashtra has so far agreed to adopt it. तो अभी धीरे धीरे वो सब स्टेट्स में आएगा. It is still in progress. चलिए, NPS में कितना था? 10% contribution by the employee and 14% contribution by the government. Upon retirement NPS में क्या होता था? 40% एन्युटी फॉर्म में ले सकते थे, मतलब मंथली इन द फॉर्म ऑफ पेंशन यू कैन कन्वर्ट दैट 40% ऑफ योर कॉर्पस एंड सम पार्ट ऑफ द कॉर्पस यू कैन ऑल्सो टेक आउट इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेचुटी, सिमिलर टू अ ग्रेचुटी, नॉट एग्जैक्टली अ ग्रेचुटी, मतलब लमसम निकाल लिया आपने कुछ पैसा बिना टैक्स दिए, तो वो भी अलाउड था. आगे चलें. IRDAI on mis-selling of insurance policies. Now, IRDAI said that their report में that 20% of complaints are related to unfair business practice, wherein non-life insurance मतलब health insurance में major problem क्या होती थी? claim payment की. That there is, let's say मुझे बीमारी हो गई कुछ, मैं डॉक्टर के पास गया, एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, बट नाउ द इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से मैंने इंश्योरेंस लिया दैट इज़ नॉट अप्रूविंग माई क्लेम. So they used to be the major grievances, or they still are major grievances in health insurance. अब IRDA क्या बोल रहा है कि AI यूज़ करके ऑटोमेटिक क्लेम प्रोसेसिंग करवाइए
स्पेशली मोटर इंश्योरेंस के केस में, जिससे कि द ट्रस्ट ऑफ द मार्केट in the companies stay intact, number one, and the claim processing becomes faster. ONDC, Open Network for Digital Commerce. Now, ONDC is very similar to what we use every day, Zomato, Swiggy. ONDC is very similar. ONDC is like just like these platforms, another platform that is being created by the government, saying that you want to get a cab, open ONDC app and you can do it. You want to buy something, open ONDC app and you can buy something just like Amazon. You want to order some food, open ONDC and order food. But वो ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ करेंगे. ONDC is not going to do it itself. ONDC is just another platform intermediary which is asking all the other intermediaries to come on its platform. Okay, or all the other sellers to come on its platform. ONDC is just like any other intermediary platform. The only difference is it is owned by the government and it does not charge such heavy rates, such heavy commissions that these intermediaries are charging. So it is going to work as a competitor, just like UPI, to all these private sector entities. I think recently there was some kind of discussion going on online, and कोई एक application बनी है जो बैंगलोर में चल रही है, where it's a subscription based application. जहाँ पे क्या होता है, let's say the name of the application is OLB, for example. Instead of Ola, we have OLB. Now, OLB says that every auto guy can come to and subscribe to OLB by just giving ₹100 as subscription money per day. अब 100 रुपये दे दिए मैंने, मैं ऑटो वाला हूँ. अब मुझे इस 100 रुपये से क्या हुआ, मुझे पूरे दिन का एक्सेस मिल गया. फॉर द एंटायर डे आई कैन जस्ट यूज OLB ऐप एंड फाइंड कस्टमर्स देयर. जैसे कि ओला में होता है या उबर में होता है, कस्टमर जैसे ही बोलेगा कि मुझे एक ऑटो चाहिए, ये ऑटो जहाँ पर भी होगा, सिमिलर टू ओला एंड उबर, उसको नोटिफिकेशन आएगा दैट दिस कस्टमर वांट्स टू गो समवेयर, यू वांट टू टेक हिम, येस और नो. तो अब उस पर कमीशन नहीं है कुछ भी, बिकॉज आई हैव गिवन अ सब्सक्रिप्शन मनी एज एन ऑटो वाला. तो उस कस्टमर ने लेट्स से बिल बना 500 रुपये का, तो वो 500 रुपये कस्टमर विल गिव डायरेक्टली टू द ऑटो गाय. देयर इज नो कमीशन ऑफ दिस OLB एप्लीकेशन नाउ. दैट इज हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर ride hailing app service, okay, by removing the commissions completely. And I think it's a better model. Similarly, ONDC is also trying to democratize the system and reduce the commissions. That is all. Now, ONDC was given the Gold Award under the category Application of Emerging Technologies for providing citizen-centric services. ये सब याद करने के लिए प्लीज़ याद कर लीजिएगा. अभी तक ONDC is not very successful. मैं रेगुलरली विजिट करता हूँ, but I don't find much on the ONDC platform. I think they're growing too slowly. अभी तक उन लोगों को कर देना चाहिए था. Centralized pension payment system. Pension payment जो होती है that is still decentralized, state wise चलती है. Now they are trying to centralize the pension payment system so that it becomes faster और corruption कम हो. So Ministry of Labor and Employment approved centralized payment system, pension payment system for EPS members. एक नेशनल लेवल सिस्टम बनाएंगे पेंशन की पेमेंट के लिए. बेनिफिट्स क्या होगा, ओवर 78 लाख एम्प्लॉय पेंशनर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम, बिकॉज ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, कन्वीनियंट होगा, और क्योंकि नेशनलाइज्ड होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, तो इसमें करप्शन वगैरह के चांसेस भी कम हो जाएंगे. ओके. फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ईजेस नॉर्म्स फॉर एक्सपेंडिचर exceeding 500 crore to accelerate capital expenditure that is pegged at 11 lakh crore. गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी डिपार्टमेंट, इफ अ डिपार्टमेंट वांट्स टू स्पेंड हेवीली ऑन समथिंग, लेट्स से मोर देन 500 crore, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे ऑन हाउ दे कुड रिलीज द मनी, हाउ दे कुड गेट द अप्रूवल फॉर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. नाउ दे हैव reduced all those kinds of restrictions or removed them completely. का ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. ओके ओके. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ week 1. We will now very shortly start with week 2. Okay, let us begin with week 2 of September. We are already done with the first one. So this is going to be a comparatively smaller PDF. Number of pages are lesser, the news are also lesser. Let's begin. थोड़े बहुत overlaps भी होंगे between what we read in the first week, so it's going to be similar. The first one is on DICGC. I hope you're aware about what DICG is. एक बार देख लेते हैं briefly.
The corporation, which is DICGC, is responsible for reimbursing insured amounts. If a bank goes down, fails, then automatic insurance is provided to depositors up to 5 lakh rupees by DICGC. The depositors do not have to pay the premium to get this insurance. The bank pays the premium to DICGC in order to provide this insurance up to rupees 5 lakh to every depositor. Remember this as well. Currently, 97.8% of deposit accounts are fully insured. ये भी याद रहना चाहिए. DICGC settled claims worth 1432 crore, not very important. Presently, there are 140 commercial banks and 1,800 cooperative banks that together are registered with DICGC. Total premium DICGC को कितना मिला इस एक साल में 23,800 crore approximately, and majority of it was contributed by commercial banks. Okay, तो ये थोड़ा सा अच्छा डेटा है. Now the news is that DICGC has launched a new tool which is called as Dawa Suchak. So the name is important, can be asked. It's basically taking the entire recovery process online. So let's say I am a person who has deposited some money in some bank, let's say 2 lakh rupees. The bank goes down. Now DICGC tells me, okay, don't worry, we will give you this money क्योंकि आपका पैसा insured था. If I want to know what is the present status of that money that I am due to receive, I have to go to DICGC, call them, etc. etc. Now they've created an online portal called as Dawa Suchak. वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालिए, ऑटोमेटिकली स्टेटस आ जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज. सेकंड पे जाते हैं, वन स्टेट वन RRB. नाउ दिस इज ओपन टू डिस्कशन बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ गुड step that the Ministry of Finance is thinking about. Basically, what they're saying is that presently one state has multiple regional rural banks, which reduces efficiency and availability of funds for these multiple RRBs in one state itself, and also increases competition. So they're saying that we should have a policy wherein one state has only one RRB. But I don't agree with it personally because I think competition is always good, in fact not bad, and funds should not be a problem because these RRBs or all the RRBs are not just financed by the government. They can also raise money from the market, they can raise money from the sponsor banks, etc., from the state governments also. And secondly, because I mentioned how they can raise money, please read about the present financial structure, the capital structure of RRBs. 2015 में amendment हुआ था, मैं आपको काफी बार पढ़ा भी चुका हूँ. Coming back, the government says that we want to consolidate RRBs so that there is one RRB in one state. Presently, some states have multiple RRBs like these. Not very important. Based on performance, they want to merge various RRBs in a single state to one RRB. RRBs were created in 1976. The capital is contributed by Government of India, state governments and sponsor banks. Right now, they can also pick up money from the market. Therefore, I don't think funding should be a major problem. Okay, that's it for the second one. Third पे आते हैं, Unified Recovery Interface. Just like UPI, ULI, now we are trying to create URI, Unified Recovery Interface. The idea is, let's say there is a bank जिसने कोई एक house recovery में डाल दिया because it was a collateral and the borrower was not able to pay his entire loan. तो ये house जो है बैंक के पास आ गया. Now bank will auction this house. Normally what happens right now is auction process is not centralized or very efficient. तो auction या तो fail हो जाता है या फिर the bank has to sell that house at a very cheap rate in the auction. Now RBI says let's create a unified recovery interface. So instead of carrying out this auction randomly or offline, we have one platform on mobile or laptop on which the details of this auction can be put in and the date can be announced. And so people across the board, across the country can come on this platform and can participate in the auction. So automatically it will be much better for the banks. House की जो actual value वो भी मिल जाएगी लोगों को, and more people will be able to participate and use this opportunity. That is the entire idea, Unified Recovery Interface बनाने का. ठीक है? PSB Alliance manages e-auction portal eBCRE. अभी ऑलरेडी एक PSB पब्लिक सेक्टर बैंक का अलायंस है जो कि ये चलाता है, but not very efficient. That is why they are thinking let's have a unified recovery interface. Okay. ULI will be a new entity. Week 1 में मैंने आपको पढ़ाया था.
that right now it comes under RBIH, but it there has to be a separate entity just like NPCI which overlooks at ULI, which owns ULI, जिससे कि so that they can carry out commercial transactions because RBIH cannot. So we need another entity, and then RBIH can sell the technology to that entity just like National Payment Corporation of India, and then that entity can control and take care of ULI. That is all there is. There is nothing else. लिक्विडिटी कवरेज रेशो अभी आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई इंक्रीज्ड, पहले इस पे आ जाते हैं डायरेक्टली सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. आरबीआई इंक्रीज्ड और एडेड सर्टेन रन ऑफ फैक्टर्स. अभी एग्जैक्टली रन ऑफ फैक्टर्स क्या है? फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ डिपॉजिट बाय लेट्स से मी इन अ बैंक, मैंने लेट्स से 10 लाख का डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल है, तो आरबीआई ने बोला हाई लिक्विडिटी कवरेज रेशो निकालना है, विच मीन्स हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जो भी बैंक के पास हैं, विच आर बेसिकली लोन्स गिवन बाय द बैंक, एंड टोटल नेट कैश आउटफ्लो एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 30 days फ्रॉम द डिपॉजिट्स दैट द बैंक हैज. तो ये एक डिपॉजिट है दैट द बैंक प्रेजेंटली हैज 10 लाख रुपीज दैट आई हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो अगर रन ऑफ फैक्टर मैंने बढ़ा दिया 5% का, विच इट मीन्स दैट एक्सपेक्टेड जो ये 10 लाख है इसको हम चेंज करके 10,50,000 कर दिए, 50,000 और बढ़ा दिया, 5% और बढ़ा दिया. तो 30 days में इट विल बी एक्सपेक्टेड दैट इंस्टेड ऑफ 10 लाख 10,50,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट और फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बैंक. वो बाहर जाएगा, अकाउंट से बाहर जाएगा, मैं निकाल लूंगा. दैट इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 30 days. जब तक ये रन ऑफ फैक्टर नहीं था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि 10 लाख का पूरा 10 लाख बाहर जा सकता है अगले 30 दिन में, इफ इट वाज लेट्स से नॉर्मल करेंट अकाउंट डिपॉजिट फॉर एग्जांपल. तो अगर 5% रन ऑफ फैक्टर बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ आरबीआई's न्यू रूल, नाउ द बैंक नीड्स मोर टू गिव आउट मोर लोन्स इन ऑर्डर टू मैनेज दिस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एट 100%. और अगर अभी बैंक का 130% ऑलरेडी था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इट विल गो डाउन because the denominator is increasing but the numerator is not increasing, or it's there at the same level, it's stagnant. So because of a policy of RBI, now the denominator has increased, numerator stays the same, तो automatically 130% से कम होके 115% तक हो जाए. Now banks will be pressurized to put in to give out either more loans or to reduce this total net cash outflow, जिसको हम reduce नहीं कर सकते. तो बैंक के ऊपर प्रेशर हो जाएगा कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स बढ़ाओ, विच इज लेस प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक. तो बैंक बोलेगा यार ये मेरे को फंसा दिया आपने, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल. तो आई होप द न्यू रूल इज क्लियर कंसर्निंग लिक्विडिटी कवरेज रेशो. ये नंबर्स याद रखिएगा. 5% रन ऑफ फैक्टर फॉर रिटेल डिपॉजिट्स लिंक्ड विद IMB, 10% रन ऑफ फैक्टर फॉर स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स एंड 15% फॉर लेस स्टेबल डिपॉजिट्स. इनकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस नाउ लिक्विडिटी कवरेज रेशो has gone down for banks, and banks are required to give out more high quality liquid loans, high quality assets, okay, which are less profitable for the bank, because high quality loan या high quality asset क्या होता है, जिसमें बैंक का रिस्क बहुत कम है, तो रिटर्न भी कम होगा. आगे चलते हैं. RBI has penalized Axis and HDFC Bank. I don't think there is much. Just remember the numbers. They might be asked if at all. सेक्शंस कुछ वायलेट हुए हैं, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं. KYC रूल्स वायलेट हुए हैं. कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट कोलेटरल ले लिया, तो ऐसी चीज़ें कुछ वायलेट हुई हैं जिसमें कुछ नंबर्स हैं. यू कैन हैव अ लुक एट इट, नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है. NABARD हैज़ नाउ बीन it was already set up as a development financial institution. Now it has been recognized by the government as a public financial institution, which means more than 51% of the stake is held by the government. It is already a part of all India financial institutions. Remember this as well. Very high chances कि ये पूछेंगे एग्जाम में. There are 4 all India financial institutions with NABARD. Now there are 5 all India financial institutions. ठीक है, ये कहीं पर mentioned है क्या? ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है, शायद नीचे मेंशन हो. Yes. NABARD was set up as a development financial institution in 2021. The objective of NABARD is to provide infrastructure loans. इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था.
set up as a development financial institution to support development of long-term infrastructure. 2022 में it was announced by RBI that it will be supervised as an all India financial institution. So in addition to EXIM, NABARD, NHB and SIDBI, now it is the fifth one. फंक्शन मैंने आपको बता दिया. NABARD कहाँ से पैसा रेज करता है? Either by taking loans from other institutions या फिर bonds वगैरह इशू करके कर सकता है. They can also borrow from the government, they can borrow from RBI, they can borrow from other banks, they can borrow from market, they can borrow internationally as well right now. Okay. So this is about NAFID. पिछली वाली न्यूज़ पे आते हैं. Let's see if there is anything to read. I don't think much. Recently, Corporate Affairs Ministry has notified that NAFID is going to be a public financial institution. So just another tag can be asked in the examination as a factual question. Nothing else is important here. Public financial institution is a government-recognized financial entity that plays a role in supporting economic development by providing long-term financial assistance to key sectors. So that is all there is. और कुछ ज़्यादा नहीं है. नाफेड के बारे में और सब में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेबी FVCI amended regulations, not very important for your upcoming examination, but briefly देख लेते हैं. Foreign venture capital investors क्या होते हैं? Foreign investors who are venture capitalists who want to invest in India. तो उनके लिए कुछ नए norms निकालें in order to simplify that how they can invest in India or how they can move money in or out. तो ऐसे कुछ regulations निकालें in order to ease doing business in India. It is an investor incorporated outside India which is registered with SEBI as FVCI. So FVCI makes investments in various funds that are registered with SEBI. Amendments क्या है? Will have to delegate registration and governance to designated depository participants. पहले SEBI directly देखता था, अभी registration और governance of these venture capital investors will be taken up by designated depository participants which are going to be registered under SEBI. So it will make it easier because directly SEBI के पास नहीं जाना पड़ेगा. DP के through आप registration, regular governance वगैरह करा सकते हो. Will now have to provide details of beneficial ownership in compliance with PMLA. So let's say एक foreign venture capitalist institution है and there are 50 investors that are providing money to that institution and that institution in turn now is investing in India. All the entire list of those beneficial owners who have invested in that FVCI, that has to be given by that FVCI, that has to be released by that venture capital institution. That is a major change. Now, resident Indians, NRIs, overseas citizens of India can also contribute to FVCI. Okay. Next पे आते हैं 22-member advisory committee on listing obligation and disclosure. So when a company tries to go public, list itself through an IPO, then it has to make a lot of disclosures. उसकी set of rules and regulations हैं. Now SEBI wants to change, make amendments to those rules and regulations. तो एक नई कमेटी बनाई है, chaired by Rama Subramaniam Gandhi. नाम याद रखिएगा. It will examine Mohanty committee's recommendations. उनकी recommendations को examine करके finalize करेंगे. Key changes क्या हैं? To bridge gap and address overlap in listing obligation and disclosure requirement, not very important. An expert group proposed a longer promoter lock-in period if funds bought through an IPO were used to repay loans. मैंने as a company IPO के through I have raised some money, but I'm using that money in order to repay loans. So I as a promoter should have a larger or longer lock-in period in the company so that ऐसा नहीं कि मैंने अपना stake बेच दिया और मैं भाग गया. That should not happen. The increasing timeline, raising the time limit for disclosing litigation from 24 to 72 hours. मतलब, if there is some kind of legal issue, then within 72 hours you have to bring it to the notice of SEBI. पहले वो 24 hours था. तो ये suggestion दिया है. Next पे आते हैं foreign exchange compounding proceedings. Department of Economic Affairs ने निकाले to simplify the process for handling violation of Foreign Exchange Management Act. अब ये FEMA के अंडर ही है कि अगर if as an investment there are some violations, as an investor there are some violations, you're bound to follow FEMA, so you have to bring it to the notice of the Department of Economic Affairs. तो उसके कुछ rules and regulations उसमें changes हैं. बहुत ज़्यादा important नहीं है, again operational है. Revision in monetary terms for adjudication of offence by compounding authorities.
अब ये कुछ नंबर्स हैं बट आई मेंशन देम, बट आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. फीस रिवाइज करिए, 5,000 से 10,000 कर दी, डबल कर दी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है. नाउ इफ देर इज एनी पेनल्टी ऑन यू, यू कैन पे दैट थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑल्सो. पहले आपको खाली डीडी से ही पे करना होता था इफ देर इज एनी पेनल्टी ऑन यू बाय द अथॉरिटी. अभी वो पेनल्टी पे करने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते. बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एज आई सेड. हाँ, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, 54th मीटिंग, दे केम आउट विद सर्टेन अमेंडमेंट्स. वो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. जीएसटी रेट्स ऑन कैंसर ड्रग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 5%. Try to remember the names, at least the beginning of these different drugs. Trastuzumab, तो ट्रास्ट याद कर सकते हो, ऐसी डेरू याद कर सकते हो, ओसिम एंड डेरवा ऐसी तरह से याद कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट एनी हाउ. तो जीएसटी रेट कम कर दिया है इसमें. इफ यू आर रेंटिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, लेट्स से आई एम अ टेनेंट इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टी रेंट पे है, तो जो भी इसका लैंडलॉर्ड होगा, he or she might not be registered with GST, but I am registered with GST क्योंकि मेरी कंपनी चल रही है, मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है. In that case, if I am renting a commercial property, not a residential property, and that is owned by a unregistered person, तो जो landlord है, he or she is not registered under GST. That means an unregistered person. In that case, I have to pay RCM. RCM is reverse charge mechanism. मतलब मुझे जीएसटी पे करना होगा अंडर आरसीएम कैटेगरी. कैटेगरी होती है जो अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए होती है. बिकॉज द लैंडलॉर्ड इज अनरजिस्टर्ड, तो वो तो जीएसटी सबमिट नहीं करेगा. बट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पसेस, सो आई शुड बी पेइंग जीएसटी. तो इस ट्रांजेक्शन में व्हाट विल हैपन इज आई विल पे जीएसटी, इज अनरजिस्टर्ड, बट द डिपार्टमेंट विल पे मी द जीएसटी बैक. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यही होता है, मैं पे करूंगा पहले, आई पे टू द जीएसटी डिपार्टमेंट अंडर आरसीएम, and then it will come back to me. Okay, under RCM the tenant will be responsible for paying the GST directly to the government, और क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए तो सरकार मुझे वापस दे देगी वो पैसा. ओके, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड टू स्टडी अ फ्यूचर ऑफ कॉम्पनसेशन से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, अभी के लिए ई इनवॉइसिंग इज ओनली एप्लीकेबल ऑन B2B ट्रांजेक्शंस. मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई तो एक ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट होता है विच इज कॉल्ड एज ई इनवॉइस. अभी इफ यू टेक माई कोर्स देन यू डोंट गेट एन ई इनवॉइस, यू गेट अ नॉर्मल इनवॉइस विच इज जनरेटेड बाय मी. ई इनवॉइस इज जनरेटेड ऑन द पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट इटसेल्फ. तो उसका पायलट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि ई इनवॉइसिंग हम B2C ट्रांजेक्शन में भी लेके आ सकें. द पायलट विल बी वॉलंटरी एंड रोल आउट इन सेलेक्टेड सेक्टर्स. तो दैट्स इट, दीज आर द मेजर चेंजेस. नेक्स्ट पे आते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन. स्टेट फाइनेंस कमीशन केरला ने सेटअप किया है नेक्स्ट, विच इज 7th. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई हैव मेंशनड इट जस्ट फॉर 2-3 बेसिक थिंग्स. नंबर 1, स्टेट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन होता है फॉर आइडेंटिफाइंग हाउ मनी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन है जिसका रोल है टू आइडेंटिफाई एंड फाइनलाइज हाउ द मनी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट्स एंड वेरियस local bodies like panchayat, municipalities, all these bodies. ठीक है, तो distribution between states and panchayats of net proceeds of state taxes that comes under state finance commission. वहां पे ये सब डिसाइड होता है. बस ये बताने के लिए था. डील वैल्यू थ्रेशोल्ड अंडर कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट. तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट निकाला है. द आइडिया इज टू कैप्चर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वेयर द डील वैल्यू एक्सीड्स 2000 crore or where the target company has substantial business operations in India. तो ये ऐड कर दिया उन्होंने कि हम चाहते हैं कि Competition Commission of India should have the ability to analyze those deals, mergers and acquisitions, big mergers and acquisitions, जहां पे हो सकता है वैल्यू 1990 crore हो, but if the target company has substantial business operation in India, then they can analyze that deal. Okay, so the idea is to bring major deals under the ambit of CCI so that they can figure out कि monopolizing तो नहीं हो रही है. That is all there is, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें. Employee pension scheme growth. Now what has happened is under EPFO अगर monthly pension 1,000 रुपए से कम है after the retirement of an employee,
then the central government has to fill that gap. Let's say, based upon the contribution of any employee, the monthly pension is coming out to be 900 rupees in any one state, or let's say 500 rupees, and the state contributes another 300. So 200 का अभी भी gap बच गया, तो central government will have to fill that gap. That is becoming a major problem for the central government because it is resulting in a very high outflow of money for the central government. Okay, that is all there is to this. इन्होंने कुछ numbers दिए हैं. Minimum pension amounts provided are 1000 for EPFO, 750 per month for orphan pensioners, and 250 per month for children pensioners. Total corpus वगैरह बहुत ज़्यादा important नहीं है. Now there is also a demand to change the minimum pension. 2014 से change नहीं हुई है और डिमांड है कि ये 7,000 7,500 से 9,000 पर मंथ मिनिमम होनी चाहिए. Otherwise this pension is actually not contributing anyway to the survival of that individual. Okay. The Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaram recently spoke about the impact of artificial intelligence on capital and labor, and he said that we should not be focusing upon how AI will replace the entire employment market, but instead we should focus upon how we can use AI to generate new kinds of employment. Okay. So if there is any kind of essay on AI or anything like that, then make sure that you're writing this down and also saying that it has been mentioned by the Chief Economic Advisor that something like this can be taken up, can be thought about. Labor should be treated as a resource and an asset rather than just something that is used by the companies and then thrown off. There's a need for the creation of jobs with protection. So basically social security पे focus कर रहे हैं. As the effect is of AI is uncertain on service sector employment, agriculture must remain a key source of employment. Now this is open to discussion. I don't think that we should be going back. Modern agriculture बोलते तो it would have made more sense. But traditional agriculture practices, modern का मतलब ये नहीं कि आप modern fertilizers use कर रहे हो, chemicals use कर रहे हो. Modern can also be organic. It just means more suitable to how we live right now. We have less land and we have more agriculture to produce. We have more stuff to produce. So how do you do that? So smarter and modern agriculture अगर बोलते तो better लगता, but directly saying that we must make sure that people are similar number of people are employed in agriculture because we don't know how AI is going to play out. That I think is regressive thinking. So although it is said by CA, this is something that we can discuss about if we get time anyhow. Okay. So this is all for week 2. We'll shortly be starting with September week 3. Okay, let us begin with September week 3. We will try and complete it within the next 15-20 minutes so that we can start with week 4. Okay. इसमें बहुत सारी न्यूज़ हमको मिलेंगी जो कि रेपिटेटिव है विद वीक 1 एंड वीक 2, या फिर रेपिटेटिव भी नहीं है तो बहुत एक्चुअल सी न्यूज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, तो हम उनको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके. Banks have, the first one, banks have large exposure in the CRE sector. CRE sector क्या है ये? Commercial real estate. Banks ने, basically RBI recently said that banks have given a lot of loans to the people who have invested this money in commercial real estate. And because commercial real estate is not doing so well, because after COVID people have got used to working from home, etc., तो उसकी वजह से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, तो ऑफलाइन उतना ट्रैक्शन या उतना वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. So commercial real estate is not doing so well. So the capability of these people to pay back these loans is also going down. And they are trying to either sell it off at loss or try to get out of these kind of investments. So RBI says that this is a cause of worry and banks might suffer because of these heavy investments in commercial real estate. The IMF reported a 12% drop in commercial real estate prices globally over the past year. तो ये कुछ numbers हैं जो याद रख सकते हो. In India, lending to the CRE, commercial real estate sector, grew by 22.8%
reaching 4 lakh crore approximately. This was higher than growth in non-food credit, which was at 13.9%. So this is the major problem with India. यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा loans दे दिए हैं, growth बहुत हुआ है. It might not give us subsequent returns in the future. Banks are sensitive to losses in commercial real estate as many have high exposure to it in their loan portfolios. Liquidity squeezes could happen, मतलब बैंक्स का लिक्विडिटी कम हो सकता है if these loans do not generate returns in terms of interest for these banks. That is what RBI has said. आगे आते हैं. SEBI, RBI, IRDI, how financial regulators are appointed and removed. Now this has become important because SEBI is in news after Hindenburg report on certain financial transactions and interests of the CEO or governor of head of chairman of SEBI. So after the reports, there are certain rumors that she might have to resign, etc., etc. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग दीज ऑफिसर्स एंड और फॉर रिमूविंग दीज ऑफिसर्स. तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. इसको प्लीज ऑनलाइन चेक भी कर लीजिएगा बिकॉज आई फाउंड दिस ऑनलाइन बट आई फेल्ट दैट देयर माइट बी सम एरर्स हियर. फॉर एग्जांपल गवर्नर डिप्टी गवर्नर 3 ईयर टर्म होता है, 5 ईयर टर्म नहीं होता है आरबीआई में. तो ये थोड़े से बेसिक्स चीजें आप चेक कर सकते हो. Very basic things that we've already read in Indian financial institutions documents. Okay. Chairperson इसमें कौन कौन होता है composition में? You have key personnel में chairperson 5 members जिसमें से 3 are whole time directors, 2 central government ministry members and 1 from RBI. ऐसे ही RBI में कौन कौन होता है central board में? Governor, 4 deputy governors, 4 directors from local boards, 10 directors and 1 central government official. IRDI में there is chairperson, 5 whole time members and 4 part time members. ये composition हो गया. फिर qualification क्या है, फिर tenure क्या है और reasons for removal क्या हो सकते हैं. Please go through them. बहुत factual है, basic है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा time नहीं spend कर रहा हूँ, but important है ये. Okay, I've given you the reason. Currency management. RBI has issued an expression of interest. They want to modernize the entire system of currency management right now. कुछ facts हैं यहाँ पे जो देख सकते हो. Currency मतलब bank notes and coins both. They want to modernize it so that the amount of currency in the system can be proactively figured out through an AI system. Number one, कितना currency system में होना चाहिए. जो currency हमें remove करना है, whether they are soil notes or damaged notes, how to remove them and how to move currency from the central bank to the banks to the hands of the people. वो पूरा management उनको modernize करने की जरूरत है. They want to do that. And how the printing of currency is carried out. That too. Okay. So they're saying that over the next 4-5 years they would want to modernize the entire currency management system so that warehouse जो है वो automate हो सके, security better हो सके currency की, इन्वेंट्री बेटर मैनेज हो सके, कमांड सेंटर को सेंट्रलाइज कर सके. दीज आर द मेजर थिंग्स. दे कैन बी अ वेरी गुड आंसर राइटिंग क्वेश्चन ऑन करेंसी मैनेजमेंट, द प्रेजेंट सिस्टम दैट इज फॉलोड. दे कैन आस्क यू अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि क्या क्या चेंजेस की जरूरत है. डेटा पॉइंट्स कुछ नोट्स इन सर्कुलेशन 136 बिलियन पीसेस और अभी 146 बिलियन पीसेस हैं. Coins in circulation 132 billion pieces. Okay. There are banknotes के लिए 4 printing presses and coins के लिए 4 mints हैं. That's it. आगे चलते हैं. RBI highlights issues of financing for sustainable agriculture. RBI बोलता है कि हमें sustainable agriculture को promote करना है और उसकी financing को भी promote करना है, especially differently, separately, so that sustainable agriculture can be promoted. And because our job is to promote finance to areas which are going to be important down the line, so this is what we also want to do. We want to promote sustainable agriculture. Okay. Issues with agro financing in India. तो उन्होंने अभी बताया कि issues क्या क्या है. Number 1, regional imbalances. Southern region receives 47% of total agri financing. Northeast region receives 0.76% of total agri financing.
तो ये इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है एग्री फाइनेंसिंग में। नाबार्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई में भी पूछे जा सकते हैं। Issues then in access to credit, 23% of agriculture credit is provided through money lenders even now. Non-integrated value chain, land fragmentation की वजह से agricultural financing becomes difficult because it is difficult to provide financing to farmers जिनका land जो है वो एक साथ नहीं है, fragmented है. It becomes very difficult to figure out, finalize those land records. Lenders, मतलब banks often prefer to work with larger farming operations. छोटे छोटे फार्म्स के साथ काम नहीं करना चाहते बिकॉज वहां पे वेरिफिकेशन करना मुश्किल होता है लैंड की ओनरशिप का, और उसके बाद हाउ आर दे गोइंग टू मेक मनी, हाउ मच मनी आर दे गोइंग टू गेट. सो बेसिकली द सेम एज इन अदर सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, working with MSMEs for banks is difficult, so they decide not to lend to banks, not to lend to MSMEs. That is what RBI wants to change. यहाँ पर भी similar है. Other issues like high cost of finance, lack of collateral, complicated loan procedures. तो ये सारे major issues हैं according to RBI Deputy Governor on agri financing, especially sustainable agriculture. Solutions क्या क्या हैं? एक तो FPOs को promote करना है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. FPOs होंगे तो उनकी bargaining power बढ़ जाती है to take money, to take loans from banks, and they can use that to grow themselves. Create a system that connects everyone involved in farming, like farmers, traders, processors. So value chain system create करना जरूरी है. Warehouse financing to stabilize prices. Whatever I have produced, if I can put it in the warehouse and then I can take a loan based on that inventory that I have, that is called as warehouse financing. उसको और promote करना जरूरी है. Adoption of financing technology to expand irrigation infra, promote micro irrigation systems and farm mechanization. Basic से solutions हैं जो कि suggested हैं. Okay. Steps क्या क्या लिए गए हैं? Very very important. यहाँ पे अब major schemes आ जाएंगी because that is what the government, RBI, NABARD, that is what they do. तो major steps देख लेते हैं एक बार. Kisan credit card has been going on for a long time. Institutional credit to agriculture, 25 lakh crore in financial year 24. नंबर याद रख लेना प्लीज. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सो दैट यू कैन क्रिएट मोर फार्म टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो फार्म में बना है वो आपके घर तक आ रहा है, उसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड होना जरूरी है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज. गोडाउन्स और वेयर हाउसेज को मॉडर्नाइज करने के लिए, रेनोवेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देना जरूरी है. ओके. मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन सो दैट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैन स्टे इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड देन it can come to the other parts of the country and even export it. Formalization of micro food processing enterprise scheme and animal husbandry infrastructure development fund for agriculture growth. अब ये schemes आ गई, तो प्लीज स्कीम्स को याद रखिएगा. दीज आर द मेजर स्टेप्स फॉर फाइनेंसिंग, स्टेप्स टेकन फॉर इंप्रूविंग फाइनेंसिंग इन एग्रीकल्चर. ओके. अकाउंट एग्रीगेटर्स पे कुछ न्यूज थी. Now, who are these people? These are the people who have your financial information and with your consent, they provide this financial information to various parties so that you can take other financial services from these parties. For example, if you want a loan, then account aggregator will give out your credit information and other financial information to the bank or to any financial entity जहां से आपको लोन लेना है. That is what an account aggregator is. Allow individuals to safely and digitally share their financial information like bank details from one institution to another. Account aggregator system has already been used to process loans worth 42,000 crore. काफी बड़ा bridge बन गए हैं वो between banks, lending firms and individuals who want to take a loan. Okay. Now these are regulated by RBI. They are also given license by RBI and they cannot read and even sell your data. They can just share your data based upon your consent. Okay. Concept of AA फिर से देख लेना, बार बार देख लेना so that you have complete information about it. RBI's governor on inflation and economy is going to be similar that we covered to what we covered in September week 1. उन्होंने अच्छी बातें बोली हैं कि economy is doing well, inflation is under control, कुछ numbers दिए हैं.
growth is expected to be good, there are certain challenges, they talk about those challenges, वही सेम बातें रहती हैं. Current inflation rates, July थे 3.6%, August 3.7%, GDP expected 7.2% in 24-25. Forex market, RBI wants to reduce excessive volatility in the rupee. Rupee will remain stable. No major risk in NBFC sector. तो ये मेजर चीजें बोली हैं. RBI raised repo rate by 250 basis points. इस पे क्वेश्चन भी आया था in phase 1 this year. So that is all about the report or the speech by the governor. आगे चलते हैं. RBI guidelines on resident OCI card holders. OCI मतलब overseas citizens of India. ऐसे इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं नॉर्मली, उनको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं. बट इफ दे स्टार्टेड रिजाइडिंग इन इंडिया, दे बिकम रेसिडेंट, नाउ दे कैन टेक यूज ऑफ एजुकेशन लोन्स फ्रॉम इंडियन बैंक्स. दिस इज द मेजर चेंज दैट आरबीआई हैज मेड कि कोई ओवरसीज सिटीजन है, नाउ ही और शी इज रिजाइडिंग इन इंडिया, हैज बिकम इंडियन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन है, बाहर रहता था, इसलिए ओसीआई कार्ड है उसके पास. For a long time they've stayed outside, so they've taken the OCI card. Now they are residing in India. They can take education loan from Indian banks. Okay. That is all that we have. इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है. LRS वगैरह के बेसिक्स बताए हैं, एजुकेशन लोन्स के कुछ बेसिक्स बताए हैं, which are not very difficult to understand, so you can very well read them whenever you want. Impact of US rate cuts on India. Now this is something that can be asked in the examination, especially in objective question MCQ format. US has reduced its policy rate by 50 basis points, which is 0.5%. इसका इंडिया पे या इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? फाइनेंशियल मार्केट नंबर 1, लोअर यूएस रेट्स मतलब इंडिया विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे रेट ज्यादा है. फॉरेन फ्लोज टू इंडिया कैन गो अप, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइसेस इन इंडिया कैन गो अप. ओके. Impact on currency. Increased capital inflow into India strengthens the demand for INR, which means appreciation of Indian rupee and depreciation of US dollar. Cheaper imports. अगर Indian rupee strong है, automatically imports become cheaper. तो crude oil जैसे जो goods हैं उनकी prices relatively कम हो जाएंगे because our currency is stronger. Greater flexibility with RBI. RBI now has the ability or the flexibility or the range to cut policy rates, because अब ऑलरेडी फेड ने कम कर दिया, हम भी कम करेंगे तो भी हमारे से और जो ऊपर 3 एडवांटेज हो रहे थे, वी विल नॉट लूज दोज एडवांटेजेस. So these are the major expected impacts of a rate cut of by the Federal Reserve on India. याद रखिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली भी एंड फैक्चुअली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. SEBI कोलोकेशन फैसिलिटी. तो कोलोकेशन फैसिलिटी के बेसिक बता देता हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स बेसिकली व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, what they do is they have to create big servers and they have to keep in the proximity जिससे कि वो डेटा ट्रांसफर इजीली कर सकें. Now what they do is they outsource these services because they're very expensive. किसी और कंपनी को दे दिया, उनको बोला हमारी बिल्डिंग के साइड में या उसके अंदर ही आप पूरा एक सर्वर सेटअप करोगे, you will manage it, you will own it, but we will give you, let's say, monthly some kind of commission or some kind of lease rent for managing that entire thing. इसको हम बोलते हैं co-location. Okay. When organizations place their servers and other essential computing hardware in space rented in physical data center owned or operated by a third party. इसमें because there are chances of data leak and because there are chances of issues with security of all of that data, इसीलिए co-location थोड़ा सा न्यूज में था. That is all there is to it. Competition Commission of India choose the Management Development Institution Society for AI study. Competition Commission of India has hired this society in order to understand the impact that AI can have on competition in the market. जैसे कि गूगल जैसी कंपनीज की वजह से competition struggles because these companies are monopolizing. अभी आप गूगल मैप्स यूज करते हो सब कुछ करने के लिए और कुछ यूज ही नहीं कर पाते हो. सिमिलरली मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी को हायर किया टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ओवरऑल कंपटीशन. अब एआई की वजह से और बड़ी बड़ी ऐसी मोनोपोलाइज्ड कंपनीज आ जाएंगी एंड बैरियर्स टू एंट्री बढ़ जाएंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, सो कंपटीशन कैन बी अफेक्टेड. अंडरस्टैंड हाउ एआई सिस्टम एंड मार्केट्स वर्क.
identify and emerging competition issues. There can be a very good essay topic based out of this, impact of AI on competition. ठीक है ना, तो थोड़े से पॉइंट्स आप मेंशन याद करके रख सकते हो. Opportunities and risks that AI brings from competition perspective, existing and evolving laws. ये सब इसको करना है. The society is supposed to do this, nothing fancy about it. आगे चलते हैं. निधि कंपनीज. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कुछ निधि कंपनीज को पीनलाइज किया है. द नेम्स ऑफ दोज कंपनीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट an understanding about Nidhi company is important, can be asked in the examination. It's a type of non-banking financial company that is formed to borrow and lend money to its members only. This is what differentiates Nidhi companies from banks, because they cannot lend to non-members. They do not require a license from RBI, but from central government. It is operated under Nidhi rules, under central government. The primary aim is to promote a habit of thrift and saving among their members, जिससे कि members आगे पैसा सेव करें और वो पैसा members को ही in the form of loan हम दे सकें. ओके. की क्राइटेरिया. निधि कंपनीज के कुछ रूल्स हैं. मिनिमम 200 members, मिनिमम 3 directors, मिनिमम net own fund 10 lakh, मिनिमम equity 5 lakh, minimum of 7 shareholders. Name of the company should end with Nidhi Limited. Activities that are prohibited for Nidhi companies: cannot deal with chit fund, cannot deal with insurance, security, leasing of finance or hire purchase, cannot take deposits or from any other person who is not a member of this Nidhi company. आगे चलते हैं. ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म. अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कुछ फैक्चुअल चीजें आएंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है. ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म एक स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, विच इज फोकस्ड ऑन इंडियन एक्सपोर्टर्स. तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. द आइडिया इज कि हम ये सारी सर्विसेज जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें, सो दैट दीज एक्सपोर्टर्स कैन इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स. जैसे आपको फ्री ट्रेड एरिया में एक्सपोर्ट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन, ग्लोबल ई कॉमर्स गाइड कुछ आपको प्रोवाइड कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कहाँ पे स्ट्रगल करोगे, उसके बारे में एजुकेट कर सकें, ट्रेड के बारे में एजुकेट कर सकें, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, एक्सपर्ट्स की एडवाइस. दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. SBI raises money via tier 2 bonds. अब tier 1 tier 2 bonds में फर्क क्या होता है? That is the objective of this news, not that SBI has raised some money through tier 2 bonds. Tier 1 bonds, अब SBI like companies can raise money from the market by issuing bonds also, not only equity shares. अगर मैं bonds से पैसा raise कर रहा हूँ, that means in short I am borrowing money from the market. Tier 1 bonds are less risky for the investor. Tier 2 bonds are more risky for the investor and less risky for the issuer. ठीक है ना, दोनों ऑपोजिट होते हैं. अगर इन्वेस्टर के लिए मोर रिस्की है तो इशुअर के लिए लेस रिस्की है. टीयर 1 बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए लेस रिस्की है, दैट मींस इशुअर के लिए ज्यादा रिस्की हुआ, क्योंकि यहां पे इफ द कंपनी फेल्स देन द इशुअर हैज टू प्रोवाइड मोर थिंग्स टू द इन्वेस्टर. ओके. टीयर 2 बॉन्ड्स में क्योंकि बिकॉज द रिस्क इज हायर फॉर द इन्वेस्टर, automatically the return that the investor expects in the form of interest is also higher. Okay. Tier 2 bond is a type of debt security that banks issue to raise capital and increase their tier 2 capital. There's nothing else out here. That is what I wanted to discuss. Extension of exports incentive scheme. अब ये 3 टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या नहीं भी पूछे जाएंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा पढ़ सकते हो. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको हम एक्सटेंड कर रहे हैं. अब एक्सपोर्ट, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट लेट्स से क्लोथ्स टू वियतनाम और टू बांग्लादेश rather than import, then what are the benefits that the government is going to provide you? Duty drawback, remission of duty or tax on exported products, rebate of state and central taxes and levies. अब ये तीनों क्या है, इनको बस समझ लेते हैं. ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? If I'm importing something and then using that as a raw material in order to export something else, then whatever taxes I'm paying on importing it, वो टैक्स का मुझे रिबेट मिल जाता है, वो टैक्स वापस मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट दिस लॉजिटेक का माउस, और ये जो
इसके ऊपर छोटा सा मूव करने वाला है. लेट्स से आई इंपोर्ट इट फ्रॉम चाइना, बट एवरीथिंग एल्स इज मेड इन इंडिया, ओनली दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया. आई इंपोर्ट दिस फ्रॉम चाइना, सो इट बिकम्स अ रॉ मटेरियल. उसमें मैंने टैक्स दिया कुछ, नाउ आई एम असेंबलिंग ऑल ऑफ दिस एंड देन आई एम सेलिंग इट आउटसाइड, आई एम एक्सपोर्टिंग इट. So whatever tax I've paid when I'm importing this small bubble, that tax the government will give it back to me because I'm exporting, using it as a raw material and then exporting another material. This is called as duty drawback. Okay, तो ये duty drawback को extend किया. Number one, remission of duty or tax on exported products. जो भी ड्यूटी या टैक्स आप दे रहे हो वो एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो वो आपको वापस मिल जाता है. ओके. Rebate of state and central taxes and levies. If the state government has levied certain taxes on you and you are exporting that good, finally making it, exporting it, so whatever taxes the state government has taken or the central government has taken, that is also given back to you. So these are benefits that are provided to people and companies who want to export in order to promote exports. Okay, that is all there is. Two new portals for exporters, Jan Sunwai portal and ERP portal by ECGC. Not very important, बस mentioned है यहाँ पे. पोर्टल के नाम याद रखना, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये थोड़ा अच्छा है. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 says that India has attained tier 1 status in this index report, and tier 1 status means the best status that India has. There are 5 key parameters which are used to come to this status for every country. What are the legal measures taken by the country? Number one, what are the technical measures taken by the country in order to promote cyber security? Organizational measures क्या लिए, capacity development क्या किया, cooperation क्या किया. प्लीज ये याद रखिएगा, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. आपसे डायरेक्टली बोल सकते हैं जीसीआई पे एक नोट लिखो, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. 5 टियर एनालिसिस सिस्टम बनाया हुआ है जीसीआई ने. टियर 1 इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड टियर 5 इज लोएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट. ओके. टोटल 46 कंट्रीज के साथ इंडिया इज इन टियर 1. स्कोर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में इन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, 98.49. अब आ जाते हैं आरबीआई जीआईसी रिपोर्ट ने जनरली क्या बोला है. मेनी कंट्रीज नीड टू बेटर इंटीग्रेट साइबर सिक्योरिटी विद देयर डिजिटल सर्विसेज. ऑल रीजन्स हैव शोन इंप्रूवमेंट. Africa has shown the most progress. Most countries are in tier 3 and tier 4. These countries have expanded digital services but need to strengthen their cyber security. Recommendations क्या हैं? Develop and regularly update a national cyber security strategy. Build capacity for cyber security professionals. Promote cooperation for information sharing and training opportunities. So human resource पे focus है and strategy पे focus है, so that you can keep analyzing what wrong is going on in cyber security and you can keep checking that. Ransomware attacks, cyber breaches, costly system outages, cyber capacity gaps, agreements, ये सारे major challenges हैं. तो ये सब भी प्लीज याद रखिएगा, can be asked in the examination. Major challenges. Okay, let's move forward. भास्कर पोर्टल एक नया बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने. स्टैंड्स फॉर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल. स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर. इट हेल्प्स द स्टार्टअप्स टू नेटवर्क विद अदर पीपल, टू फाइंड मेंटर्स एंड टू क्रिएट अ सेंट्रल डेटाबेस जहां से वो काफी सारे अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक. Create. Ministry of MSME has created a new पोर्टल बोल सकते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जिसका नाम है क्रिएट, सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी. तो एग्जैक्टली क्या है, रूरल एरियाज का, हिली एरियाज का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इकोनॉमिक पोटेंशियल, लाइवलीहुड, इस सब को इंप्रूव करने के लिए ये एक नई स्कीम बोल सकते हैं, नया प्लेटफॉर्म बनाया है. It will help advance rural industrialization and foster enterprise creation to retain traditional artisans in challenging regions like Ladakh. That is all there is. उसके अलावा कुछ भी नहीं है. एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रिएट की फुल फॉर्म क्या है. सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME. UPS is less burdensome for the government. There can be a question on comparison between UPS and National Pension System. तो कुछ numbers पता होने चाहिए. Let's see those numbers.
Center and states together right now spent 9.6 lakh crore on pension, which is 3.3% of India's GDP. Number one. One second. Old pension scheme provides fixed pension, ये हम पढ़ चुके हैं already, which is normally 50% of their last drawn salary. New pension scheme जो बनाई थी उसमें सरकार used to contribute 14%. फंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे. There was no guaranteed pension amount. UPS is a new proposal which is more sustainable than the old pension scheme. Employees with 25 plus years of service will be guaranteed 50% of their last drawn salary. मतलब OPS के जैसा हो गया. Government contribution will be increased from 14 to 18.5%. Pension will be adjusted for inflation, but because it's funded, it doesn't create a future liability like OPS. तो inflation adjustment pension का भी होता रहेगा. Automatically, because OPS और NPS दोनों के features mix कर रहे हैं, तो it is expected that the government's financial stress will come down through UPS. Okay. Competition Commission of India antitrust law. Now, what is antitrust law? That can be asked in the examination. Basically, if companies do something that is anti-competition, उसको हम antitrust बोलते हैं, and there are laws regarding anti-competition which are managed by CCI. So, if any company is violating any such law which is hindering competition, then CCI comes into play. They recently found Amazon and Flipkart in violation of local competition laws, monopolizing tendency वो कर रहे थे. Exclusive product launches, prioritizing certain sellers, promoting specific listing over others. Okay, that's it. So this brings us to the end of September week 3. I hope it was useful. As I said, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं थी. Repetition शुरू हो जाता है as soon as we move from one week to the other, तो थोड़ा बहुत repetition आता है. We'll very shortly start with September week 4. Okay, let us begin with the discussion on September week 4. इसमें RBI का जो discussion है वो काफ़ी important होने वाला है. Other than that, we will try and cover everything, but SEBI और others का उतना important नहीं है जितना discussion RBI related है. यहाँ पे काफ़ी important information है जो आप याद रख सकते हैं. Can be asked in the examination, very high chances, especially in objective type of questions. Okay, let us begin. The first one is linking Odisha scheme with RBI's CDC. तो CBDC, so Central Bank Digital Currency के बारे में आप लोगों को पता ही है. I don't think I need to teach that again. The Subhadra scheme for women in Odisha has been launched, wherein what they are saying is they are connecting the Subhadra scheme which is for women with CBDC. तो जो भी benefit मिलेंगे Subhadra scheme के अंदर to the women will be given in the form of CBDC. Now CBDC has two elements. One is CBDC for wholesale, one is for retail. The RBI is trying to expand on the retail. CBDC के form में इनको payment किया, and that payment can be used by these women in various places. Okay, तो digitally basically CBDC को use कर पाएंगे. So that is the idea. I don't know how successful it's going to be because CBDC is still very basic और आप expect करो कि the lower strata of the society starts using something like CBDC. I think a very long shot, but let's see how it works out. Okay. एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है CBDC के बारे में. we've already read, so I don't think we need to read more about it at the moment. You can revise it. Very well can be asked in the examination. Second पे आ जाते हैं. NRI deposits increase. अब इसमें main number important नहीं है. The important part is these three types of accounts which can be opened by NRIs in India. Questions have been asked in the past about these and can be asked again in the future as well. There are these three accounts. FCNR, foreign currency. तो ये foreign currency में account खोल सकते हैं, but NRO and NRE can be opened in Indian currency only. But all these three accounts can be opened by non-residents in India, non-resident Indians. So non-resident deposits हैं, ये भी non-resident deposit है, ये भी non-resident deposit है. These are ordinary deposits. अब मैं नाम से ही आपको बहुत सारे features बता रहा हूँ. These are ordinary deposits, so these are basically used for making deposits from incomes that are made from India only. For example, if an NRI has a property in India
और उसका रेंट आ रहा है उसको, सो दैट वुड बी नॉर्मली प्रोवाइडेड और डिपॉजिटेड इन एन एनआरओ अकाउंट. तो बैंक नॉर्मली उसके लिए एनआरओ अकाउंट ही खोलेगा बिकॉज इट इज फॉर ऑर्डिनरी डिपॉजिट. यहां पे इट इज फॉर एक्सटर्नल डिपॉजिट, नॉट फॉर ऑर्डिनरी डिपॉजिट. अब आ जाते हैं आगे. एज आई सेड ये फॉरेन करेंसी में है, विच मीन्स दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इन डॉलर्स, दिस इज गोइंग टू बी इन रुपीज एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इन रुपीज. ओके. Now, FCNR can be a recurring deposit or a fixed deposit. It cannot be a current or saving account. Both these accounts can be current, saving, recurring and fixed deposits. Repatriability of funds, matlab when can you take these funds out? There are no restrictions on FCNR. There are no restrictions on interest earned in an ordinary account, NRO account, but principal जो भी उस account में है उसका repatriability पे कुछ limitations है. No restrictions in an NRE account as well. Taxation, only NRO is taxable because income is earned, because the money that is coming in this account is from income earned from India, right? That is why it is taxable. Both of these are exempt because ये कहीं और से आपने income earn करी and you're putting it in these accounts. FCNR accounts allows NRI to hold deposits in foreign currency for a period of 1 to 5 years. NRI accounts are used to manage income earned in India. So अगर if this account does not has any income earned which is not from India and it's going to be taxable, nobody is going to do that because you'll be losing money there. Okay. NRE accounts are rupee denominated and allows NRI to remit foreign earnings to India. NRE का ये purpose होता है. Please remember these differences and these features. These are very important, can be asked in the examination. Numbers are not very important. India's net FDI, foreign direct investment, increases. $5.5 billion से net FDI increase हुआ है in this time period, 3-4 months only, not much. Okay. बहुत ज़्यादा numbers important नहीं है. I would not focus too much upon them. The amount of money that investors withdrew from India increased to 15.9 billion, मतलब जो वापस ले गए in these 4 months from 14.7 billion. Not very important. Okay. This one is only numbers and they're not very important, just for your understanding purpose. आगे चलते हैं. Irregular practices observed in grant of gold loans. ये बड़ा important है. क्यों important है कि we should be aware about the irregular practices seen in giving out gold loans and then managing those gold loans by various banks as well as NBFCs, especially NBFCs. तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है either as an MCQ or as an answer writing as well. क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज क्या हैं? Number 1, shortcomings in using third parties for loan process like appraisal and disbursement. So a lot of these NBFCs and banks are outsourcing the process of appraisal of loan and disbursement of loan, which makes the loan process system more risky. आप appraisal ही किसी और से करा रहे हो तो of course वो appraise करना चाहेगा कि हाँ लोन दे दो, okay, because वो private banks focus upon recovery rather than good appraisal. Similarly, if you outsource it, they're going to focus upon recovery, not on good appraisal. Valuation of gold without the presence of customer. Gold की जो valuation है वो customer की presence के बिना हो रही है, तो वहां पे भी fraud हो सकता है. Lack of tracking on how the borrowed funds are used, the usage of those funds. Lack of transparency during auction of gold ornaments. Auction कब होगा? When the other person is not able to pay back. So you use the gold as collateral, so now it's your property as a bank or NBFC and you auction it off. Okay. तो उस auction में transparency नहीं है. Weakness in monitoring of loan to value ratio. Loan to value ratio RBI ने determine करी है. I think it's 75%. You can check it once. I'm not very sure, but let's say it is 75%. So 1 kg gold, let's say 10 lakh rupees, and against that, I'm assuming 10 lakh rupees, against that you can give a loan of only 7.5 lakh. But the companies, the banks and the NBFCs are giving loan, let's say, of 9 lakh. So loan to value ratio is not being monitored. Incorrect application of risk weight, मतलब कितना risk weight होगा एक individual का या एक gold property का, etc. etc. So improper categorization of gold loan as non-performing asset. Categorization कब हो रही है, कब नहीं हो रही है? There is no clarity on that. Evergreening practices, मतलब if a person is not able to pay back, तो उसका loan का structure change कर दिया, evergreen कर दिया, and you give him another loan. So that is would be evergreening.
High number of gold loans granted to the same individual, loan disbursed in cash. I think the limit there is 20,000 if I can remember it correctly. So that is also being violated. So please try and remember all these violations, irregular practices, they can be asked in the exam. आगे चलते हैं. India's international investment position. India's international investment position क्या है? अब ये क्या, इसका मतलब क्या है? International investment position. The financial assets owned by Indians outside and the claims on non-residents and the liabilities held by residents of an economy to non-residents. मतलब investment done by other people outside of India, in India, versus investments done by Indians outside. That is international investment position. Okay, तो ये net होती है. You calculate the entire investment of Indians abroad, and then you calculate the entire investment of foreigners in India, and then you subtract one for the other. The difference between assets and liabilities constitutes IIP's net position. तो या तो ये net claim हो सकता है या net liability हो सकता है. Net claim मतलब if we have invested more, we have more claim, and if they have invested more in us, तो हमारी liability बन गई. Okay? आगे चलते हैं. Net claims have increased, मतलब net claims of non-residents in India increased by 6.7%. मतलब the claim that non-residents have on Indians, bringing the total to 368 billion. The rise was because foreign-owned assets in India grew by 28.8%, while Indian-owned overseas assets grew by 22 billion. तो हमने जो assets बाहर own करते हैं वो भी grow हुए, but they have grown lesser compared to the assets owned by foreigners in India. Okay. Net claims represent the difference between what foreign entities, मतलब non-residents own in India, and what Indian entities own overseas. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी. एक तो थोड़े से नंबर देख सकते हो. Net Indian international investment is $368 billion, which means हमारी liabilities ज्यादा हैं compared to our assets. मतलब हमने बाहर इन्वेस्ट कम किया है, foreigners are investing more in India, which is a good thing because that brings in money. Direct investment, which means foreign direct investment, is $552 billion, and Indian direct, overseas direct investment बोलते हैं, Indians investing abroad is $246 billion. Portfolio investment here is very less, हम बाहर कम इन्वेस्ट करते हैं, but foreigners investing in India in the form of portfolio investment is very high, $277 billion. Other investment छोड़ देते हैं. Reserve assets are very high, $652 billion. एंड यहां पर अदर इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं. अदर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली काफी ज्यादा है. मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन, पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लोन इज $225 billion, वेरी हाई. पीपल हु आर investing in India in the form of currency and deposits is also very high, $160 billion. Okay, so these are very high. Reserve assets is assets owned by Reserve Bank of India. जो भी उनके assets होते हैं, gold, reserve transposition, आपको पता ही है वो सब क्या है ना, IMF वगैरह, SDR, all those things. Those are also very high, $652 billion, almost 60%. So reserve assets, 62% of India's international financial assets. ये याद रख सकते हो. Along with that, these numbers I think you can remember will not be asked directly in the examination, but can be put in wherever there is a question about foreign direct investment, investment of non-residents in India, investment of Indians abroad, external commercial borrowings. उस सब पे अगर क्वेश्चन है तो you can put in these numbers. They are important. Okay. Reserve assets I've already explained to you briefly. Let's move forward. India's balance of payment during Q1. Numbers again are not important. बैलेंस ऑफ पेमेंट के एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको रिवाइज कर लीजिएगा. ऑल्दो ईएसआई में ऑलरेडी पढ़ाए हैं, बट प्लीज दिस गोइंग टू एक्ट एज अ रिवीजन फॉर यू. करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज टू 1.1% ऑफ जीडीपी. दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड. गुड्स, मर्चेंडाइज इज गुड्स का जो हम ट्रेड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो उसका डेफिसिट बढ़ गया है. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है? यू हैव रेमिटेंसेज, या जो भी इफ यू आर अर्निंग लिविंग एंड अर्निंग अब्रॉड और आप इंडिया में पैसा भेज रहे हो, दैट बिकम्स योर रेमिटेंस. नेट आउटगो ऑन प्राइमरी इनकम अकाउंट. प्राइमरी इनकम अकाउंट क्या होता है? इनकम फ्रॉम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो जो भी लोन्स
फॉरेनर्स ने इंडिया में दिए हैं, इंडियंस ने फॉरेन में दिए हैं या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें जो भी पैसा मिल रहा है, व्हाटएवर इनकम यू आर अर्निंग, दैट बिकम्स योर प्राइमरी इनकम अकाउंट। तो प्राइमरी इनकम अकाउंट में आउटगो ज्यादा है ना। सो दैट मीन्स फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया और फॉरेनर्स आर गिविंग मोर लोन्स टू इंडियंस, टू कंपनीज इन इंडिया और बैंक्स इन इंडिया, और उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी जा रहा है वो बाहर जा रहा है। सो आउटगो इज मोर। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगेन हैज टू बी पॉजिटिव, उसकी वजह से ज्यादा है। नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, मतलब बोरोविंग्स बाय इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड स्पेशली बैंक, एंड नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स 4 बिलियन है। तो ये मेजर कुछ नंबर्स हो गए। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। ये एग्जैक्टली हैं क्या, ओके। Foreign investments were 3.23 lakh crore compared to outflow of 45,000 crore. Numbers not important again. ये सब पे मैं फोकस नहीं करना चाहूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आइटम्स होंगे? करंट अकाउंट, यू हैव गुड्स, यू हैव सर्विसेज, यू हैव प्राइमरी अकाउंट, यू हैव सेकेंडरी इनकम। तो जैसे प्राइमरी इनकम होती है ऐसी सेकेंडरी इनकम होती है जहां पे यू गेटिंग सम मनी थ्रू दैट। देन यू हैव कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। एनआरआई या तो डिपॉजिट्स कर रही है या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो रही हैं। एंड देन यू हैव रिजर्व एसेट्स, जो मैंने बताया था क्या होता है, दैट इज इट। सो दीज आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। आई डोंट थिंक आई नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पास्ट में भी। दिस गिव्स यू एन आइडिया कि इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में इन तरह के इश्यूज से पूछे जा सकते हैं। सो रिवाइज योर बेसिक्स अगेन। इंडियाज एक्सटर्नल डेट एज एट द एंड ऑफ जून 2024, इंडिया की जो एक्सटर्नल डेट है वो कितनी है? एक्सटर्नल डेट होती क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया, कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, दैट बिकम्स आवर एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इज 18.8%। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्लीज रिमेंबर। और ओवरऑल कितना है 2024 में? जून 2020 एज ऑन जून 2024 इज $682 बिलियन। तो पूरे साल का इतना है, ओके। मेजॉरिटी ऑफ आर डेट इज इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर 54%। तो हम ज्यादातर लोन्स यूएस डॉलर में ही ले रहे हैं। दैट इज ऑल देयर इज, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ऑन एनबीएफसीज ग्रोथ। S&P सेज एनबीएफसीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो रीजंस नीचे दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। Retail loans by banks and NBFCs could triple by 2030. It will drive household leverage to 34%. So they're saying that because retail loans are increasing by banks as well as NBFCs, the amount of borrowing that households will have will move up to 34% from 23%. अभी 23% on average ये बढ़ जाएगा because more and more people have access to loans, so they're going to take more loans. So average loan per household is going to increase. Indian lenders strong underwriting will support asset quality. मतलब इंडिया में जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, because they're very focused on giving out loans and they are now trying to give loans to low risk customers and lending to low risk customers. तो इसकी वजह से also we are expecting that the entire amount of loans in the market are going to increase. Commercial banks have become cautious in lending to microfinance institutions, and because of that NBFCs have to give out loans, these MFIs, जिसकी वजह से because of that credit cost for microfinance institutions is expected to increase. Finance companies are expected to sustain strong loan growth than banking sector. Along with the banking sector, it's expected NBFC sector is going to grow much faster. ओके, बिकॉज रिटेल सेक्टर में जो मेजर लोन प्रोवाइडिंग हो रही है वो एनबीएफसी सेक्टर के थ्रू हो रही है। आगे चलते हैं। आईसीआरए ऑन बैंक्स बोरोविंग वाया बॉन्ड्स एंड मोर। रेटिंग एजेंसी जो है इकरा, वो बोल रही है बैंक्स बोरोविंग थ्रू बॉन्ड्स हैज इंक्रीज। तो बिकॉज हमने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखा था, दैट सीडी रेशियो इज फॉलिंग डाउन, इज गोइंग अप बिकॉज banks are giving out credits but they're not able to get enough deposits from retailers. Because of that they are having to go to various other methods of borrowing, and that is why bonds have come out as a good method of borrowing for banks. Okay, historically banks focused on issuing tier 1 and tier 2 instruments, especially during periods of low profitability.
बैंक बॉन्ड इशुएंस एज यू कैन सी हियर हैज इंक्रीज्ड 36,000 करोड़ से 76,000 करोड़ हो चुका है. Since financial year 23, as profitability has improved, focus has shifted towards infrastructure bonds supported by Indian government's emphasis. तो infrastructure bonds के थ्रू भी बहुत ज्यादा borrowing banks कर रहे हैं. So they borrow long run and then they invest or lend that money long run for infrastructure projects. ये बड़ा important है, याद रखिएगा इसको. Banks have issued bonds worth 767 billion. This amount represents 75% of total bond issuances. Infrastructure bonds typically have a minimum tenure of 7 years, with many being issued for 10 to 15 years. Advances to infrastructure sector are estimated at 13 lakh crore, with public sector banks holding 75%. Now, this is good as well as bad for the economy, because if these infrastructure investments become bad in the future, then automatically these banks are going to go down. Okay. As per ICRA, gold loans by banks and NBFCs are expected to cross 10 trillion, 10 lakh crore, जो भी gold loans दे रहे हैं banks और NBFCs, and may reach to 15 lakh crore also. Okay, so gold loans is also growing very fast, 25%, because gold की value बहुत बढ़ गई, तो लोगों को बड़ा फायदा होगा. So people are trying to not sell their gold and instead use it wisely by taking loan on that gold, है ना. ओके, सो दैट इज इट. आगे चलते हैं. क्राइसिल रेटिंग्स ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू राइज. मैंने आपको रीजन बताया था, बिकॉज बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग लॉट ऑफ लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस, तो ऑटोमेटिकली द एनबीएफसी सेक्टर इज गिविंग आउट लोन्स, एंड व्हेन दैट हैपेंस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज. ओके. The profitability of MFIs measured as return on managed assets was 3.524%, but is expected to moderate. तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज दे हैव टू बोरो फ्रॉम एनबीएफसीज नाउ. RBI allowed MFIs to adopt risk-based pricing. The removal of cap on interest margins allows MFIs to adjust interest rates based on the risk profile. तो रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे वो लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, मांग सकते हैं, बट देन इट विल बिकम टू डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बोरो, बिकॉज दीज इंटरेस्ट रेट्स देन बिकम टू हाई. अभी भी मैक्सिमम लिमिट इज 24%. अब अगर 30% पे कोई लोन एमएफआई दे रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वायबल फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन टेकिंग द लोन. ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एसआरओ फिनटेक डेटा. According to data from self-regulatory organization from fintechs, जहां पे phase 1 में क्वेश्चन आया था, the volume and value of credit disbursements among fintech companies declined on a quarter-to-quarter basis. So volume and value of credit disbursement among fintech companies has declined according to SRO data. नाम क्या है SRO fintech वाले का? Fintech Association for Consumer Empowerment. Disbursement के कुछ numbers हैं, not important. तो एफटी एसआरओ एफटी के ऊपर क्वेश्चन फेज 1 में आया था, जिसमें बेसिक फीचर्स दिए थे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फिनटेक के, और पूछा था विच वंस आर करेक्ट. आरबीआई स्टडी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, द इंडियन एक्सपीरियंस. एक बार देख लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे आरबीआई क्या बोल रहा है. इंट्रोड्यूस्ड इन 1972 टू एंश्योर दैट सेक्टर्स दैट आर क्रेडिट वर्दी बट स्ट्रगल टू गेट लोन्स रिसीव एडिक्वेट फंडिंग सपोर्ट. दैट वाज द आइडिया ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. It has a positive impact on banks' overall asset quality as per RBI. Specialization in PSL segments. The share of PSL in total bank credit has gone up. This is a positive move. Consistently, banks are consistently meeting PSL targets as well. PSL के बारे में आपको पता है. I don't think we need to discuss that. For banks, commercial banks, it's 40%. For RRB, 75%. For small finance banks, 75%. Urban cooperative banks, 65% from financial year 24-25, 75% by financial year 25-26. SEBI पे आ जाते हैं. IRA launched data benchmarking institutions. Indian REITs Association, REIT Real Estate Investment Trust, जो आप रियल एस्टेट के अगेंस्ट एक म्यूचुअल फंड टाइप ले सकते हो, उसको REIT बोलते हैं. They have launched a data benchmarking institution which is managed by CareEdge. तो ये फैक्चुअल हो गया, शायद पूछ लें एग्जाम में. SEBI is expecting that asset under management of REITs is going to increase in the future because the real estate market is growing very fast.
Real estate क्या है? They are mutual fund like institutions that enable investors to invest in real estate sector by pooling small sums of money from a multitude of individual investors. I hope you understand. हम ये already पढ़ चुके हैं. Okay. रीट से इन्वेस्ट करते तो एग्जैक्टली आप कर क्यों रहे हो? व्हाट आर द एडवांटेजेस? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स. नंबर वन, you're able to diversify away from the financial market, and you're able to reduce the impact on banks because you're using real estate investments into the capital market. So these are the major three advantages. ये भी आप याद रख सकते हो. Can be asked in the examination. Okay. आगे चलते हैं. SEBI allowed mutual funds to buy and sell credit default swaps. I hope you understand what a credit default swap. If a company or a stock defaults, then the person who has a CDS benefits. तो ये opposite negative correlation में काम करता है. तो अगर मेरा स्टॉक जीरो हो गया, क्रैश कर गया, तो जिसने मेरा CDS लिया होगा उसको बहुत फायदा होगा. That is what is CDS. Okay. So SEBI has allowed mutual funds to buy credit default swaps to improve liquidity in the corporate bond market. Mutual funds are now allowed to sell CDS as well, which means they can take on the role of providing protection to an insurer. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Bonus share allotment time reduced to T+2. If you want to issue bonus shares as a company, then the time has been reduced from around 2 weeks to just 2 days. Okay? तो ये सर्कुलर SEBI ने रिलीज किया है. Not very important. Let's move forward. एज आई सेड, आरबीआई वाले इंपॉर्टेंट है. एसआरओ एफटी वगैरह पढ़ सकते हो. उसके नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेबी अमेंडेड रूल्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. अगेन बेसिक चीजें हैं. रिड्यूस द टाइम फॉर पब्लिक टू गिव फीडबैक ऑन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स. फैक्चुअल चीजें याद रखिएगा. फॉर कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन मेजर एक्सचेंजेस, इट्स जस्ट 1 day इंस्टेड ऑफ 7 days. फॉर अदर कंपनीज लाइक कंपनीज गोइंग पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम, इट्स 5 days इंस्टेड ऑफ 7 days. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रख सकते हो. ओके ओके, 1 second. ओके, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. सिक्योरिटाइजेशन पढ़ चुके हैं. CD रेशो हमने अभी पढ़ा है सितंबर का. ओके, आई थिंक दिस इज इट बिकॉज वी कैन बेसिक चीज़ें हैं. वी कैन स्किप दीज थिंग्स. यू कैन ट्राई एंड कवर देम वंस बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम reading through it and understanding it. It's going to be super simple for you guys. Okay. So that's all for September. We'll try and cover October's week 1 also in the next 1 or 2 days because वहाँ से भी questions exam में पूछे जा सकते हैं. Okay, that's all for this session. Have a nice day. I hope you loved it. We were able to cover the entire September within I think 3-4 hours. Okay, all the best.